Good morning, students. Very warm welcome all of you in our online class. Dear students, through my last video, we have completed up to chapter number 5 in English grammar. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, title or heading of chapter is adverbs. What adverb? What is adverb? We are talking through definition. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. What is adverb? An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. Just like I'm writing she runs. She runs. It is a complete sentence. Just like who runs, we get answer she runs. What does she do? She runs. So we have got answer, but I have written she runs slowly, she runs fastly. So slowly or fastly, the words are adverbs because it is modifying. It is used to modify the meaning of verb. Just like how does she run? She runs slowly. How does she run? Otherwise we can say she runs fastly. So fastly, slowly words are as an adverb in this sentence, which is used to modify the meaning of verb. Now kinds. I hope you have understood very well about the adverb in Hindi. एडवर्ब क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. एंड एडवर्ब इज ए वर्ड. एडवर्ब ऐसा एक शब्द होता है जो मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब. सेंटेंस में यूज की गई वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है. रन्स को क्या बताया? स्लोली. और आगे जाके रन्स को क्या बताया? फास्टली. तो ये किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है. कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे दौड़ता है. कैसे दौड़ता है? तेज तेज दौड़ता है या तेजी से दौड़ता है. तो ये क्या है? किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करती है एडवर्ब, या कोई एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, या कोई दूसरी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं. जैसे सी रन्स वेरी स्लोली. सी रन्स वेरी स्लोली. सो वेरी इज एन slowly is adverb, but very is also another adverb which is used to modify the meaning of another adverb. She runs very slowly. You didn't to write this. I was telling about you the meaning of this definition. Now dear student, we are going to study about the kinds of adverb. As you know, there are 7 kinds of adverb. There are how many kinds of adverb? 7 kinds. Just like first is adverb of manner. It tells how an action is done. It tells about the manner of any action. Just like we used to show the manner as the adverb of manner in sentence by using such adverbs: neatly, slowly, beautifully, wisely, nicely, cleverly, etc. are adverb of manner. He writes neatly. He runs slowly. She did it beautifully. She solved it wisely. She did it nicely. She responded cleverly. All are adverb of manner. इन हिंदी एडवर्ब ऑफ मैनर कहा गया है गुणवाचक क्रिया विशेषण. इसमें कोई काम कैसे हुआ उसकी गुणवत्ता बताई जाती है. अच्छे से हुआ या फिर बुरी तरीके से हुआ, धीरे धीरे हुआ, साफ सुथरा हुआ, सुंदर तरीके से हुआ, बुद्धिमानी से हुआ, या फिर क्लेवरली कह सकते हैं कि बड़ी चतुराई से हुआ. तो ये क्या शो करता है कि कैसे हुआ. मैनर शो करते हैं, तो उसे क्या कहा गया? एडवर्ब ऑफ मैनर. डियर स्टूडेंट, सेकंड adverb of time. It tells at what time or when action is done. It tells about the time of any action. Just like we can take example adverb of time as daily, tomorrow, late, early, always, already, just, now, etc. are adverb of time. He goes to school daily. He will come here tomorrow. Just like she got up late. She reached early. She always baths. She has already reached.
दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। इन हिंदी एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण। इसका यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है सेंटेंस में कोई काम कब हुआ और काम होने का समय क्या था। जस्ट लाइक डेली, रोजाना, टुमारो, कल, लेट, देरी से, अर्ली, जल्दी, ऑलवेज, हमेशा, ऑलरेडी, पहले से ही, जस्ट, अभी अभी, नाउ यानी अभी। सो these adverbs are used to show time. Third is adverb of place. It tells where an action is done. It tells about the place of any action. Just like these adverbs are here, there, out, in, up, down, nowhere, elsewhere, far, beside, indoor, outdoor, etc. These are adverb of place. In हिंदी adverb of place कहते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ये हमें बताता है कोई काम किस जगह हुआ, जगह के बारे में जिक्र होता है। हियर मीन्स यहाँ, दियर मीन्स वहाँ, आउट मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, नोवेयर मीन्स कहीं नहीं, एल्सवेयर और कहीं, फार मीन्स दूर, बिसाइड यानी पास में, इंडोर अंदर और आउटडोर बाहर की तरफ। तो दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टू द frequency of and time, how many time. It tells about how often one, just like once, twice, etc. an action is done. Once singly, twice two times, thrice three times, again means every time, never, no, often, rarely, scarcely, hardly. These are adverb of frequency. In हिंदी फ्रीक्वेंसी कहते हैं बारंबारता, कितनी बार हुआ, ये बताता है कोई काम कितनी बार होता है। जैसे वंस यानी एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन यानी बार बार, अगेन यानी दोबारा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑफन मीन्स कभी कभार, रैरली बहुत कम बार, और स्कैर्सली मुश्किल से, हार्डली भी क्या होता है मुश्किल से यूज। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है हमें, बारंबारता, कोई काम एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, कितनी बार। Now is adverb of degree. It tells how much something is done, how much in quantity, uncountable. Just like we count the action or any verb. Just like very, quite, hardly, almost, fairly, fully, wholly, much, more, most, etc. Adverb of degree. डिग्री बताते हैं यानी कोई काम कितनी बार हुआ, वो भी अनकाउंटेबल तरीके से। जैसे वेरी, आई एम वेरी टायर्ड, हिंदी में कह दिया मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब कितना थका हुआ मेजर नहीं कर सकते। ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड, वह बिल्कुल संतुष्ट है। ही हार्डली टुक एनी मील, मुश्किल से उसने थोड़ा खाना लिया। ऑलमोस्ट पूर्णतया, फेयरली अच्छे से, फुली पूर्णतया, होली संपूर्णतया, मच मीन्स ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, मोस्ट मीन्स भी सबसे ज़्यादा। मच मीन्स ज़्यादा, मोर मीन्स से थोड़ा ज़्यादा, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। बट ये अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते कितना ज़्यादा, कितना और ज़्यादा। सिक्स्थ इज सेंटेंस एडवर्ब. इट टेल्स अबाउट सिचुएशन और कंडीशन ऑफ सेंटेंस, जस्ट लाइक श्योरली, frankly, obviously, certainly, luckily, fortunately, definitely. These are adverb, sentence adverb. Sentence adverb कोई condition बताते, solely निश्चित रूप से, frankly, obviously स्पष्ट रूप से, certainly निश्चित रूप से, luckily भाग्य से, सौभाग्य से, fortunately वही हम सौभाग्य से ले सकते हैं, definitely निश्चित तौर पे. These are sentence of adverb. Now last is interrogative adverb. Dear student, interrogative adverb. These adverbs are used to asking question, just like where do you live, what did you do, whose car is this, where does she live, which book do you like most, when do you go to school, why didn't you go to school yesterday. These are interrogative adverb. Thus, dear students, we have discussed about the main or important kinds of adverb, just like adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, sentence adverb, and seventh number is interrogative adverb. I hope you have understood very well about the use of adverb and about the examples of adverb. Dear students, in हिंदी हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में हम क्या समझ रहे हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब. पहले हमने पढ़ा एडवर्ब क्या होता है, तो हमने पढ़ा एडवर्ब
वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ की गई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करके बताते हैं, उसको और ज़्यादा अर्थपूर्ण बताते हैं। जैसे मैंने कहा वह दौड़ती है, फिर मैंने कहा वह धीरे धीरे दौड़ती है, तो धीरे धीरे वर्ड क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। सी रन्स and she runs slowly. Slowly is the adverb in this sentence. Now kinds of adverb we have discussed about the kinds of adverb. Dear student, the rest part of this chapter, just like we can say as a use of adverb, position of adverb, we will discuss in my next video. Dear student, one exercise has been left for the last chapter, so I will provide before this video, and you will have to write down that exercise. After that you will have to write down the adverb, the work of this class in your fair notebook. I have you understood? Thank you very much.